Good morning, student. Now we are discussing exercise 5.8, chapter 5, class 12th, maths, NCERT. In previous lectures, we have discussed the role theorem and mean value theorem. All proof and their geometrical representation we have already discussed. Now, based on questions, we have discussed question number 1. Verify Rolle's theorem for the function of fx is a function given. This fx is equal to x square plus 2x minus 8, and this x belongs to closed interval minus 4 and 2. We have already discussed every polynomial function is differentiable and continuous at any closed interval, any interval of real numbers. Then this is a polynomial function, and this function is differentiable and continuous everywhere. Then this we know that given fx is a polynomial function and we know that given function is a polynomial function, and every polynomial function is continuous and differentiable everywhere. So what this first fx is continuous in closed interval AB. Second, fx is differentiable in open interval AB. And third, find f of A and f of B. F of minus 4 is equal to minus 4 square plus 2 into minus 4 minus 8. Then this value is 16, this minus 8 and minus 8, this value is 0, and f of 2, then f of 2 is what? 2 square, 2 into 2 minus 8, this value is 4 plus 4 minus 8 is equal to 0. Then f of minus 4 is equal to f of 2. Therefore, three condition of Rolle's theorem is verified. The necessary condition is applicable of this fx, this function. That means three conditions are satisfied. Then we can say that the Rolle's theorem is applicable for this function, this polynomial function. And after this, we can say that there exists one point C lies in this open interval minus 4 and 2.
therefore there exists some point, or at least a point C belongs to open interval -4 and 2, then f dash C is equal to 0. Then fx is equal to x square plus 2x minus 8. Then f dash x differentiate with respect to x, then 2x plus 2. Then this f dash c is equal to 0, then replace this x is equal to c, then f dash c is equal to 2c plus 2 is equal to 0. That implies 2c plus 2 is equal to 0, and 2c is equal to -2, and c is equal to -1. That means the -1, c is equal to -1, a point lies between -4 and 2. That means c is equal to -1 is the correct answer of this. That means Rolle's theorem is applicable, and examine this. The point C lies between their interval. And next question, examine if Rolle's theorem is applicable to any of the following functions. You can say something about the converse of Rolle's theorem from these examples. क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन करना है हमें कि जो हमारे पास फंक्शन दिए हुए हैं उन फंक्शन के अंदर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है. हमने वेरीफाई नहीं करना, ओनली एग्जामिन दैट. दैट मीन्स 3 कंडीशंस सेटिस्फाई करनी है हमें. देन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, एंड एफ एक्स is equal to greatest integer function, and for x belongs to closed interval 5 and 9. फर्स्ट हमने आपको बताया कि एवरी पोलिनोमियल फंक्शन, एवरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, sin x, cos x are differentiable, but this greatest integer function is different type of function. तो इस तरह के functions में हमें पता होना चाहिए कि इसका ग्राफ क्या बनेगा, ये कंटिन्यूअस होगा नहीं होगा, डिफरेंशिएबल होगा नहीं होगा. तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम एक इस क्लास इंटरवल के अंदर इसका एक ग्राफ बना के देखेंगे और देन फाइंड दैट दिस कंटिन्यूअस और नॉट. This x-axis and this y-axis, and then this 1 2 3 इन पॉइंट्स को मैं छोड़ के चल रहा हूँ यहाँ पे. this 5 से स्टार्ट करेंगे. this 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9. Then this function of greatest integer function, we know that what is greatest integer function. अगर हमारे पास एक फंक्शन में वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x की, तो जो हमारे पास इंटीजर्स हैं x और x से लेस, वो सभी इसके अंदर x इंटीजर देंगे. लाइक एज दिस f of 5, then this integer 5 is equal to 5. Then f of 5.1, then this 5.1 also 5. Then this 5.8, then this 5.8, and this greatest integer function is value is 5. We know that this value of 5 to 5.999 something, the value is 5. Same thing, the value 6
अगर हम यहाँ पे 6 लेंगे द वैल्यू इज 6 एंड देन 6.1 देन वैल्यू इज 6 देन 6.9 द वैल्यू इज आल्सो 6 एंड सो ऑन। इसी तरह से हम इस फंक्शन को लेते चलेंगे तो हमारे पास ग्राफ क्या बनेगा? देन ग्राफ इज दिस, हम 5 पे वैल्यू लेंगे, दिस 5 पे वैल्यू होगी और 5 से वैल्यू 6 तक जाएगी बट 6 पे वैल्यू नहीं होगी। दिस डॉट एंड दिस नोड, दैट मीन्स 6 पे वैल्यू 6 नहीं है, देन 6 पे क्या है, देन वैल्यू 6 पे वैल्यू 6 है, दिस वैल्यू इज 6 एंड देन 7 पे वो वैल्यू नहीं है, दैट मीन्स दिस। सेम थिंग 7 पे वैल्यू है, एट पे नहीं है, एंड सेम थिंग 8 पे है और 9 पे नहीं है। दिस नोट दैट मीन्स नॉट इंक्लूडेड इन दिस इंटरवल। अब देखेंगे कि जो हमारे पास ये फंक्शंस है, ये फंक्शन ये अलग अलग इंटरवल में है, दिस 5 to 6 5 to 6 में ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है 5 to 6 and then 6 to 7 is also differentiable, 7 to 8 is also differentiable and 8 to 9 is differentiable। इन डिफरेंट टाइप के जो हमने जब इस क्लास इंटरवल को हमने तोड़ के लिखा then the function is differentiable and the function is 5 to 9 is not differentiable। 5 से 9 के बीच में ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, आप देखेंगे, एंड नॉट ए कंटिन्यूअस फंक्शन, ये कंटिन्यूअस फंक्शन भी नहीं है। देन वी कैन से दैट fx is not continuous in closed interval 5 9 and the function is not differentiable in interval 5 to 9। आप ग्राफ से देख सकते हैं the function is differentiable but in different interval, not continuity to 5 to 9 इंटरवल। अब देख सकते हैं कि फंक्शन जो है वो 5 से 9 तक डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन 5 से 6 तक है, 6 से 7 तक है, 7 से 8 तक है, 8 से 9 तक है, इस तरह से डिफरेंशिएबल है। और इसके बीच में हम इसके टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, बट 5 to 9 के बीच में हम टेंजेंट ड्रा नहीं कर सकते, तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। और फंक्शन कंटिन्यूटी नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूटी बीच में हम एक कर्व ड्रा नहीं कर सकते, एक लाइन ड्रा नहीं कर सकते विदाउट कंटिन्यूटी। एंड देन दिस, अभी हमने ग्राफ बनाया, द फंक्शन fx इज नॉट कंटिन्यूअस एंड fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, एंड द थर्ड कंडीशन इज f of 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर दिस वैल्यू इज 5 एंड f of 9 and this value is greatest integer function 9 and this value is 9 and f of 5 is not equal to f of 9। That means the Rolle's theorem is not applicable because three conditions are not satisfied। Three conditions are not satisfied, then Rolle's theorem is not applicable। This part 1, and can you say about something about the converse of Rolle's theorem from this example? Rolle's theorem का कन्वर्स क्या है? कन्वर्स है कि अगर हमारे पास जो गिवन इंटरवल है, अगर गिवन इंटरवल के अंदर जो हमारे पास ओपन इंटरवल है 5 to 9, अगर उसके अंदर कोई भी सी पॉइंट लाई करता है तो वो अदर थ्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। दैट मींस द कन्वर्स ऑफ
रोल्स थ्योरम। दैट मीन्स अगर हम रोल्स थ्योरम है कि अबाउट 3 कंडीशन आर सेटिस्फाइड दैट at least one point C lies in the given interval, open interval, then f dash C is equal to 0। तो अब हमारे पास जो given अब कन्वर्स क्या है, कन्वर्स है कि अगर f dash C is equal to 0 है और वहां से एक C पॉइंट आता है, the C point is lies in 5 to 9, then the function is continuous, differentiable and this, ये 3 conditions उसने सेटिस्फाई करनी चाहिए। बट वी नो दैट दिस 5 to 6, 5 to 9 interval is this, and 5.6 a point lies between them, but this point is lies the 5 to 9 and this एक पॉइंट लाई तो करता है, दैट मीन्स फॉलो द अबव 3 कंडीशन, तो उसको 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, लेकिन ये तीनों कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं करता, तो इसलिए रोल्स थ्योरम का जो कन्वर्स है वो एप्लीकेबल नहीं है। दैट मीन्स द कन्वर्स ऑफ नॉट ट्रू। दैट मीन्स एक पॉइंट है, ऐसे ही आपके पास 5.6 पॉइंट समथिंग भी इसके अंदर लाई कर सकता है, 7 पॉइंट समथिंग भी लाई है, 8.9 भी इसके अंदर आता है। दैट मीन्स there are so many points are there but the converse is not true because 3 conditions are not satisfied। same question number 2 second part, the class interval is changed, then आप कर सकते हैं। then third part अब मैं कराऊं, third part में देखें, given that a function question number 2 part 3rd, given that fx is equal to x square minus 1, x square minus 1 and the given condition is what, the interval is given minus 1 to 1 is closed interval, 1 and 2, then fx, we know that this x square minus 1 is a polynomial function and polynomial function is a differentiable and continuous function, then that means first condition is satisfying, fx is continuous in closed interval, and second condition is fx is differentiable, fx is differentiable in open interval. What is the condition? Condition is that the function is polynomial, every polynomial is function, every polynomial function is differentiable and continuous everywhere. And third one is the f of 1 square minus 1 is equal to 0, and f of 2 what? This 2 square minus 1, that means 4 minus 1 is equal to 3. This f of 1 is not equal to f of 2. That means the condition is not set, third condition is not satisfying, necessary condition, so the function the Rolle's theorem is not applicable. Fx is equal to x square minus 1 in given interval, closed interval 1 and 2. And then what can you say about this? Then f dash c, उसका f dash c निकाल लें, आप f dash x निकाल लें। f dash x is equal to what? f dash x is equal to 2x, and 2x, this 2x is equal to 2c is equal to 0, that means f dash c is equal to 0, then c is equal to 0, that means a point 0 lies between this, इसके बीच में लाई करता है? नहीं करता, ये पॉइंट ही इसके बीच में लाई नहीं करता, तो इसके जब
इस इंटरवल के बीच में कोई पॉइंट लाई ही नहीं करता, हमारे पास कोई पॉइंट सी ऐसा है ही नहीं, तो हमारे पास कन्वर्स भी ट्रू नहीं होगा, क्योंकि एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड सी इज इक्वल टू 0 है, और जो सी इज इक्वल टू 0 है वो इस क्लास इंटरवल में लाई नहीं करता. देन वी कैन से दैट इन द कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम नॉट होल्ड गुड. दैट मीन्स question number third, if a function minus 5 to 5 is the given interval, closed interval to R is a differentiable function and f dash x does not vanish anywhere, then prove that this f of minus 5 is equal to f of 5. Okay. The given a function, question number third, f a function in closed interval 5 to 5 is a real valued function. The domain codomain is R and the function is differentiable. Fx, this function is a differentiable, and other is f dash x does not vanish. F dash x does not vanish. क्वेश्चन का मतलब समझे. द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल. दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल. कंडीशन में ही दे रखा है. दैट मीन्स एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -5 to 5, and if a function is differentiable then function is continuous. Then a function is continuous in closed interval -5 and 5. And then f of, अब थर्ड कंडीशन क्या होगी? f of -5 इज इक्वल टू f of 5. अगर ये रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करता है तो इसकी थर्ड कंडीशन इसको अप्लाई करनी पड़ेगी. हमें मान के चलना पड़ेगा कि दिस फंक्शन इज इफ अ फंक्शन applicable to the Rolle's theorem, then suppose f of -5 is equal to f of 5. हमने मान लिया. If f of -5 is equal to f of 5, अगर फंक्शन हमारे पास ये इक्वल होगा तभी ये रोल्स थ्योरम को एप्लीकेबल करेगा. देन f of f dash x does not vanish. That means ये सारी condition 1, 2 and third condition is this, and 3 condition are satisfied. That means the function, the given function is differentiable है. Then f dash c is equal to 0 देगा. f dash c is equal to 0 देगा. But given that f dash x does not vanish, मतलब कहीं भी उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं आएगी. f dash c 0 के इक्वल नहीं होगा. That means does not vanish. तो ये कहीं भी एप्लीकेबल नहीं होगा. तो इसका मतलब हमारी एजम्पशन गलत है. हमारी जो सुपोजिशन थी वो wrong थी. f of -5 is equal to not. That means our supposition is, this is contradiction. Our supposition is wrong. Therefore f of -5 is not equal to f of 5. ये इक्वल नहीं हो सकते. That means you can this type questions solve this type. And then question verify mean value theorem. अभी हमारे पास जो क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे रोल्स थ्योरम पे थे. क्वेश्चन अभी मैं आपको
मीन वैल्यू थ्योरम पे कराऊंगा एंड देन आप सारे क्वेश्चन फिर आप कर सकते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम पे क्वेश्चन अभी करते हैं हम। देन क्वेश्चन नंबर 4, मीन वैल्यू थ्योरम। द फंक्शन इज गिवन fx is equal to x square minus 4x minus 3 in closed interval 1 and 4. Verify mean value theorem. Fx is equal to x square minus 4x minus 3 in the interval closed interval AB where a is equal to 1 and b is equal to 4. तो हमने वेरीफाई करना है किसके लिए? मीन वैल्यू थ्योरम के लिए। देन फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट? fx is continuous in closed interval AB and fx is differentiable in open interval AB. This both condition are satisfied because the function is polynomial function. Polynomial function is continuous and differentiable everywhere. Polynomial function है तो आप पूरे की पूरे लिख देंगे। The function given function is a polynomial function. Polynomial function is continuous and differentiable everywhere. Then this fx is equal to x square minus 4x minus 3. Then third condition is f of 1 not equal to f of 4. ये condition आनी चाहिए हमारी। f of 1 is equal to this 1 square minus 4 into 1 minus 3. This value is 1. This minus 4 minus 3. Then this value is minus 7 plus 1 minus 6. Then f of what? 4. And f of 4 is 4 square minus 4 into 4 minus 3. This 16 minus 16 minus 3. This is equal to minus 3. That means f of 1 is not equal to f of 4. दोनों आपस में इक्वल नहीं है। That means above all three conditions satisfy the mean value theorem. This function of mean value theorem. That means the mean value theorem is applicable on this. And then third one is there exists at least one point C lies between 1 to 4. Then f dash C is equal to f of b minus f of a upon b minus a. Then use this f dash C, that means f dash x, this 2x minus 4, this 2c minus 4 is equal to, then this f of b is what? अभी हमने निकाला f of b is minus 3 and this value is minus 6 and this minus 6 and b minus a 1 minus 4 minus 1. Then this 2c minus 4 is equal to minus 3 plus 6 upon 3. And then 2c minus 4 is equal to this 3 upon 3. This value is 1. Then 2c minus 4 is equal to 1. 2c is equal to 1 plus 4. 2c is equal to 5 and c is equal to 5 by 2. And 5 by 2 is lies between 5 by 2. 5 by 2 means 2.5 and 2.5 lies in given interval 1 and 4. That means the verify the mean value theorem. And the fifth question is verify this given function is that the x cube minus 5x square minus 3x is a polynomial function. Every polynomial function differentiable continuous is the same question. And question number 6, examine the applicability of mean value theorem for all three functions given in the above exercise question 2. Question 2 में आप अब मीन वैल्यू थ्योरम से कर सकते हैं। जहां पे f of 1 is equal to f of 2 आ जाएगा वहीं पे हम क्वेश्चन को छोड़ देंगे। द फंक्शन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस रोल्स थ्योरम, और जहां पे नॉट इक्वल टू आ जाएगा वहां हम क्वेश्चन को करेंगे। दैट मीन्स यू कैन
try yourself of all parts of this question. Thank you, and complete this chapter. Okay, thank you.